We have done nodal analysis so far. Now we'll be studying mesh analysis. So like in nodal analysis, what we did is we applied KCL equations to find nodal voltage. In mesh analysis, what we'll be doing is we'll be applying KVL equations to find loop currents. You can say loop or you can say mesh. So mesh is actually a loop that does not have any. So mesh is a loop that does not have any other sub loop. So it's the smallest loop that is possible. So now using mesh analysis, what we'll be doing is we'll be taking one mesh at a time and we'll be applying KVL equations to find out mesh currents. Rather than finding branch currents, we'll be finding mesh currents because with mesh currents, the number of equations will be reduced. Uh, with branch currents, the number of equations are more, so you have to solve for more variables. With mesh currents, the number of equations are less. We have to solve for lesser number of equations, and we can still obtain all the currents in all the branches. Say for example, we have a circuit like this. Let this be 10 volt. This is 1 ohms. This is 2 ohms. Again 1 ohms and 2 ohms. If we were to identify mesh currents, branch currents first of all, we would say this is current I1, this is current I2, this is current I3. Fine. So we have three branch current that we have to solve for. But if we assign the mesh currents, we have two loops in here or two meshes. This is loop 1 and this is loop 2. So we'll be assigning mesh currents or loop currents. Let this be small I1 and let this be another mesh current small I2. Okay. Instead of now marking or denoting branch currents, we'll be denoting mesh currents. And with mesh currents, number of variables we have is reduced. We have only two mesh currents, I1 and I2, where while as we had three branch currents, I1, I2, and I3. So we had three variables. We had to solve for three variables. With mesh currents, we have only two variables. We have to solve for only two variables, and therefore it becomes easier for us to solve. So before solving this particular circuit, I want to also say about mesh analysis is that it is applicable to only planar circuits. It is not applicable to non-planar circuits. So non-planar circuits are those circuits in which there may be branches that may cross each other. Fine.
In a planar circuit, branches do not cross each other, while as in a non-planar circuit, branches cross each other. So for mesh analysis, it's only applicable to planar circuits, while as nodal analysis is applicable to both planar as well as non-planar circuits. So even if the branches are crossing each other, we can still apply we can still apply nodal analysis, because even at those crossings, we'll be having a node at which point we can apply the KCL equation. But with mesh analysis, it becomes very difficult to solve for non-planar circuits. So this is not applicable to non-planar circuits. Now coming back to the circuit, what we do in this case is, now we have assigned the mesh currents I1 and I2 in the two meshes, loop 1 and loop 2. So what we do is we apply KVL now, applying KVL to loop 1. Fine. By KVL equations, we have 10, that is the voltage source, is equal to current flowing, the voltage drop across this 1 ohm resistor. The current that's now flowing through it is small I1. ये जो capital I1 से ये मैं इनको rub कर लेता हूँ. We have two currents, small I1 flowing in mesh 1 and small I2 flowing in mesh 2. So I1 is current also flowing through branch, through this 1 ohm resistor. Fine. So 1, that is the resistance, into I1 plus, so current I1 is flowing from here, plus minus current I1 is flowing from here. Now current, what current is flowing through this 2 ohm resistor? We have to see now the drop across this 2 ohm resistor to complete our KVL equation. Now I1 is flowing in this loop, but I2 is flowing in this loop in this direction. So total amount of current that's actually flowing through this 2 ohm resistor is I1 minus I2. So we can write 10 is equal to 1 into I1 plus 2 into I1 minus I2. 3I1 minus 2I2. This is our equation number 1. I'm applying KVL to loop 2. Uh, let us start with this resistance. I2 is the current flowing through this resistance. I2 is the current flowing through this resistance. Now the current that is actually flowing through this resistance, again you know that it is equal to I1 minus I2. But in I1 minus I2 is in this direction. So if we are moving in this direction, we'll say that the current flowing is I2 minus I1. Now KVL once applied to loop number 2 will be equal to 1 into I2 plus 2 into I2, 2 into I2 ये वाला 2. Now this 2, uh, while keeping the same current direction constant, so ये plus 2 into I2 minus I1 is equal to 0. So this is KVL equation when applied to loop number 2 or mesh number 2. So this becomes 3I2, 4I2, so minus 2I1, or you can say 2I1 minus 4I4, 5I2. 5I2 is equal to 0. This is our equation number 2. So we have equation number 1 and equation number 2. So from equation number 2, we can say I1 is equal to 5I2 divided by 2. ये
I1 का वैल्यू आ गया यहाँ पे. We can substitute this back in equation number 1. So once we substitute it back here, we get 3 into 5i2 divided by 2 minus 2i2 is equal to 10, which implies 15 minus 11 by 4i2 is equal to 10. 11 by 4i2 is equal to 10. 11 I2 is equal to 40 by 11. So I2 becomes I2 we have got is equal to 40 by 11 amperes. Substituting that value back here, we get I1 is equal to 5 into 40, 200 by 22, or you can say 100 by 11 amperes. Okay. So you can also check the mathematics. So this is how we solve for how we actually use mesh analysis for solving any circuits. Instead of denoting branch currents, denote mesh currents. With mesh currents, the number of equations are reduced. Instead of having three variables, we only have we only had two variables here, and it became easier for us to solve for two variables with two equations. 20/11 होगा ना I2. वो आप देख लो, आप चेक कर लो, आप वो चेक कर सकते हो. मे बी कुछ मैथमेटिकल 11 मिस्टेक ना. की होगी. Let's do this example. This is 12 ohms. So you have to solve for I1 and I2. Fine. So let's identify this as loop number 1, this as loop number 2. So applying, so you have to find out I1 and you have to find out I2. So by applying KVL to loop number 1, (45 volts is equal to uh, through the first resistance to I1 is the voltage drop. Through this resistance, the voltage drop is 12 into I1 minus I2, plus through this resistance, the voltage drop is 4I1. 2, 14, 18 I1 minus 12 I2. So this is equation number 1. By applying KVL to loop 2,
in the direction of current. The voltage drop is first of all uh, starting from here 9I2, fine. So it is in the direction of current plus minus. So ये जो फिर 30 volts है in the direction of current it is also positive, so it will be added to this 30 plus plus minus ये ऐसे बन जाएगा in the direction of current, so it is also positive 3I2 plus 12. Instead of writing I1 minus I2, I'll write I2 minus I1 plus 12 I2 minus I1 is सर इन द equal to डायरेक्शन ऑफ करंट 0. नेगेटिव हो जाना चाहिए ना वोल्टेज, हम्म क्योंकि हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर वो यस राइट सर। अगर वो राइट हैंड साइड पे होता तो फिर वो नेगेटिव होता, बट इन दिस लेफ्ट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो नहीं फिर अगर हम लोग उस Yes, sir. This is right, sir. हाँ Yes, सर यस सर यस सर the summation of EMF और summation of IR is equals to 0 होता है। हाँ, तो ये सबकी पोलैरिटी सेम है, सब एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। तो नहीं अगर हम लोग सर उस लिहाज से देखें ना पहले लूप में, हाँ, पहले तो लूप में भी फिर हम लोग 45 को अगर राइट हैंड साइड लेंगे तो वो तो नेगेटिव जा रहा है ना। राइट हैंड साइड लो या लेफ्ट Yes, हैंड साइड लो, लेट मी एक्सप्लेन। तो शायद ये कन्वेंशन भूल गए हैं। ये आपका पहला लूप खाली है, मैं खाली Yes, पहला sir. लूप Yes, sir. दिखाऊंगा, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, ये 45 था, ये 2, 12 एंड 4, फाइन। I1 is the current, so I1 is the current, I1 ऐसे चल रहा है तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। I1 ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप्स पहले आप ले लो। I1 आप मान लो I1 ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये I1 जो इस केस में है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ -45, फाइन, प्लस ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये तो पॉजिटिव है क्योंकि इसमें करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, सो प्लस 2I1, फिर यहाँ पे भी प्लस 12I1 प्लस 4I1, अभी तक ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, फाइन। तो इसमें से मैंने ये वाला पोर्शन 2I1 प्लस 12I1 प्लस 4I1 ऐसे ही रखा। 45 को लेफ्ट साइड लूँ या आप राइट हैंड साइड लूँ वो एक ही बात है, वो दूसरी साइड पे पॉजिटिव रहेगा। और इन अदर वर्ड्स यू कुड डायरेक्टली हैव सेड सिंस 45 इज द ओनली, इस केस में खाली 45 की पोलैरिटी जो है बाकी ड्रॉप से डिफरेंट है, तो यू कैन पुट 45 आइदर ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जो पोलैरिटीज होंगी दैट वुड हैव बीन ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये तो हो गया आपका लूप 1 का केस, इसमें ऐसे था। लूप 2 के केस में क्या हो रहा है, सबकी पोलैरिटीज आप पहले आइडेंटिफाई कर लो, यू कैन देन add them up, subtract them and equate the whole term to 0, or you can see which polarity is positive, which polarity is negative. uh, सब पॉजिटिव पोलैरिटीज को एक साइड पे रख दो, सब नेगेटिव पोलैरिटीज को दूसरे साइड पे रख दो ऑफ द इक्वल टर्म। लूप 2 में क्या हो रहा है, लूप 2 में आपके पास 9 ohms ऐसे, फिर आपके पास प्लस माइनस ऐसे, यहाँ से एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक और रेजिस्टेंस है। तो मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे दिखा दी I2, तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे दिखा रहा हूँ तो ये प्लस माइनस हो गया, I2 भी प्लस टू माइनस ही जा रहा है, यहाँ से भी I2 प्लस माइनस, यहाँ से भी I2, ये प्लस माइनस होगा वट एवर इज द वैल्यू 2, 3, 4 say for example. So when I take all these currents in this direction, you can see all in the direction of current all the voltage they have the same polarity, ठीक है।
ये भी प्लस टू माइनस जा रहा है, ये वाली करंट भी प्लस टू माइनस जा रही है, ये वाली करंट भी प्लस टू माइनस जा रही है, ये वाली करंट भी प्लस टू माइनस जा रही है. That means all these terms will add up with each other. 2i2 plus whatever is the voltage here plus v plus 3i2 plus 4i2. Fine. Now if this were the case, अगर ये माइनस प्लस होता, अगर ये माइनस प्लस होता तो इस करंट, जब करंट माइनस टू प्लस जा रही है, बाकी के कंपैरिजन में इसकी पोलैरिटी जो है नेगेटिव है, तो इसको मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा एंड इक्वेट दिस ऑल टू जीरो. ठीक है. So you should always keep, you can start always by doing this thing, that you add all the voltage and equate those terms to zero, rather than saying that this particular voltage is equal to all these voltage drops. Okay, you can make an habit of using this type of equation. Equate, subtract, add all these equations depending upon direction of current and equate them to zero. So ये direction of current में positive to negative, you take it as positive voltage. Direction of current में negative to positive, you take it as a negative voltage. अब ये माइनस वी यहाँ पे लिख दूं मैं, या फिर इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊं, तो राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव बन जाता है. ठीक है. अब मैं इक्वेशन को v इक्वल टू 2i2 प्लस 3i2 प्लस 4i2 लिख दूं, या 2i2 प्लस 3i2 प्लस 4i2 इज इक्वल टू v, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे ही देख लो, अब पहले लूप में I1 के डायरेक्शन में वोल्टेज माइनस टू पॉजिटिव जा रही है, तो अगर ये 45 में इस साइड पे ले जाता ऑफ द इक्वल टर्म, तो फिर ये इस साइड पे -45 प्लस आई इक्वल टू 0 होता, तो वहां पे तो ये नेगेटिव ही हो रहा है. ठीक है. इट इज दिस वोल्टेज इज इन फेज अपोजिशन टू ऑल अदर वोल्टेज ड्रॉप्स, तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो रहा है. अब मैंने इसको राइट हैंड साइड पे लिया था या लेफ्ट हैंड साइड पे, वट एवर, फिर उससे वो पॉजिटिव हो गया था. I1 5/4 एम्पियर आएगा. तो अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, यू कैन सॉल्व फॉर दीज टू इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ यस डन कर लिया सर, हो गया निकल सर आया आंसर. I1 5/4 9 and 12 I2 -5/8. 9 12 24 I2 वही minus 12 I1 is equal to 30 or minus 30 rather. I1 कितना आ रहा है? 5/4 सर 5/4 आ रहा है. Yes sir, yes sir. Yes sir, 2.5. 2.5 and 0. Yes sir, same. Yes sir. 2.50. 2.5 and 0. सही है. 2.5 and 9 rupees will be zero. सर जो आपने लूप में करंट असाइन, डायरेक्शन असाइन किए, वो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ना, अपनी मर्जी से. I1 I2 नहीं नहीं, जो आपने I1 लिखा है उसके बाद एक ग्राउंड मारा है करंट डायरेक्शन असाइन करने के लिए राउंड ना, में. वो एक्चुअली यहाँ पे हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैंने उसी हिसाब से लिया. अगर आपको I1 ऐसे लेना है तो आप वैसे भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है. यू वांट टू टेक इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. नहीं, नेगेटिव, हाँ, करंट का वैल्यू नेगेटिव आएगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्शन जब दिखा रहे हो, आप बोलोगे कि ये लेफ्ट टू राइट करंट का वैल्यू -4 है. ठीक है. राइट टू लेफ्ट करंट का वैल्यू +4 है. इसका मतलब सर हमने उसकी डायरेक्शन गलत ले ली है ना, यही तो बोलने वाला है वो क्वेश्चन आंसर जो है.
हाँ, वो उसका मतलब है कि ये एक्चुअली राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। जब आपकी करंट नेगेटिव आएगी उसका मतलब है करंट एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रही है, नॉट इन दिस डायरेक्शन। यस सर, यस सर, यस सर। तो डायरेक्शन along with the value is actually important. बब्बी, मोबाइल अपना। ये अपने माइक्रोफोन्स बंद रखो। मैं इनकमिंग बंद खाली आता हूँ, क्या मिला अब तुरंत बंद हो गया ना। चलो 6 ohms, 16 volts, 4 ohms, 8 ohms, 2 ohms. This is 10 I naught. This is a voltage source. I naught is the current flowing from here. ठीक है, I naught जो आपकी करंट है वो ये है। ये आपकी मैश करंट I1 हो गई, ये आपकी मैश करंट I2 हो गई, ये आपकी मैश करंट I3 है। ऐसे फाइन। So find out all these I1, I2, I3 and I naught. ठीक है, I naught will actually be simply I3. I naught और I3 सेम ही है।
हेलो सर। यस। हमें सॉल्व करना है सवाल। हाँ हाँ। सर पेन कॉपी नहीं है इस समय मेरे पास। तो फिर क्या करने आते हो? सर सॉरी मैं घर पे नहीं हूँ इसलिए। So apply KVL to all these loops. In loop 1, 16 is equal to 4 I1 minus I3 because I3 भी करंट ऊपर से फ्लो हो रही है, प्लस 2 ओम रेजिस्टर मिनट I1 और बस 1 मिनट और सर बस। I नॉट की जगह जैसे मैंने बोला I नॉट इज इक्वल टू I3, we can directly write that. 8 I2 माइनस ऊपर से करंट I3 फ्लो हो रही है, माइनस 10 I3, ये 10 I3 है, प्लस 2 I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0. आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई. तीसरी इक्वेशन 6I3 प्लस 8I3 माइनस I2 प्लस 4I3 माइनस I1 is equal to 0. So ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई. So using these three equations you can solve for I1, I2 and I3. तो जो I1 आ रहा है ना वो 22/7 आ रहा है हम्म. और I2 10/7 आ रहा है और I नॉट आ रहा है 88/21। नहीं. I नॉट सर I नॉट। I0 I3 एक ही है. हाँ सर। As per this I0 तो माइनस 4 आ रहा है. I1 I2 का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है. We can solve. कुछ गड़बड़ की होगी. ये माइनस 4 एम्पियर आ रहा है. I1 I2 का मुझे पता नहीं है. First equation is 6I1 सर -18/7 I1 minus 2I2 minus 4I3 is equal to 16. Second equation is 2I1, 2I2, 10I2 minus 10I2 minus 8 minus 18 plus 18I3 is equal to 0. Third equation is 4I1
-8 I2 6 18 14 18 -18 I3 is equal to 0. So I1 6 -2 -4. Sub minus 54/7 I2. Yes, sir. और I3 -4 ampere. अगर आपका I3 -4 आ रहा है फिर आपका आंसर ठीक है. Yes, sir. Yes. आप लोगों के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं, यू कैन डायरेक्टली put this final equation 6 -2 -4 2 -10 18 4 8 -18 इसका inverse into 1600, so it will give you the answer. So I1 कितना आ रहा है? Sir, -18/7. I2 -54/7. I3. And -4. Yes, sir. ठीक है, तो you can actually solve for this matrix equation A is x equal to A inverse B and find out the answer. This is 4K, this is 2K, this is 5K, this is 1K, 4 volts, 10K, 3 volts, this is 3K. So determine the current through 10K resistance. तो एक्चुअली जब आपको क्वेश्चंस दिए एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आपको जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां पे आपको लिखा होगा कि वेदर यू हैव टू अप्लाई नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व फॉर एनी इक्वेशन. सो फाइन. सो यू हैव दिस अनदर, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट तो मैंने दिखाई नहीं है, आपकी मर्जी है. मुझे आई नीड दिस आंसर. यस. तो डिफरेंट मैशेस के लिए डिफरेंट डायरेक्शन ले सकते हैं, मींस एक मैश में क्लॉकवाइज और दूसरे मैश में एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज when you will solve for any circuit, you whatever direction of current you want to take, you can take it, but you need to identify that clearly what direction you have taken and accordingly my value is this much. Fine. ठीक है, तो जब आप फिर एग्जाम में कल को क्वेश्चन करोगे तो आपका आंसर माइनस आएगा. क्यों आया? क्योंकि मैंने करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ली थी, नॉट क्लॉकवाइज.
You can mention that once you solve it. ठीक है? So my our current value is this. Direction of current taken is clockwise or anti-clockwise. You can write that in the bracket. It's up to you. You can take one mesh clockwise. You can take another mesh anti-clockwise. उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट will not direction of current will you have to only identify the direction of current along with your answer. सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, एक्सेप्ट करना। Fine. So I you have this is your task. Find out the current through the 10 k ohm resistor, but you have to solve this using mesh analysis. तो आपके पास actually 4 loops हैं. So you have 4 KVL equations. मैं आपको असाइनमेंट रख दूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा 4 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है? So you can mark this as assignment number 1. ओके सर, ओके सर। तो वेयर डू वी हैव टू सबमिट सर? वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा गूगल फॉर्म वगैरह, गूगल फॉर्म्स की लिंक, तो वहाँ पे आप सबमिट करोगे. तो अभी तक जो मेश एनालिसिस हमने किया, हमने खाली वोल्टेज सोर्सेज यूज किए. नाउ इफ देयर इज अ करंट सोर्स, with a current source there will be two cases. One, if the current source is, say for example you have a circuit like this. If you have a circuit like this where your current source is सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से दिखाइए, कौन सा? असाइनमेंट पर सर। This is 3.48, problem number 3.48, fifth edition of. Keep your mics muted. This is problem number 3.48, जो पीछे वाली problems, unsolved problems, fifth edition of SEDIPO. Now, as I was talking about, now with current sources, there will be two cases. One will be the case where the current source is only located it is located towards the periphery of a mesh. Fine. That means ये mesh के end पे है. अगर ये mesh के बीच में होगा, that will be the second case. If your current source is located between two meshes, it is not located towards an extreme of a mesh, then this is another case. So case 1, ये तो simple है. Case 2, this is similar to what we had done earlier with nodal analysis. वहाँ पे हमने super node identify किया था. अब instead of having a super node here, we'll identify this as a super mesh. Fine. That means we can actually ignore the current source. वहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते थे, यहाँ पे हम करंट सोर्स को ओपन कर लेंगे. we'll say that as if this does not exist here and solve for rest of the circuit. So this now becomes a super mesh, this whole circuit. तो ये जो इसकी एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट, इसकी जो एनालिसिस है सुपर मैश की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. हम ऊपर वाले केस को आज डिस्कस करेंगे. यस सर
but supernode was between two non-reference nodes. हाँ, यहाँ पे जो अब current voltage source was located between two non-reference nodes. Current source, if it is located between two meshes, this is यहाँ पे तब super mesh का concept we'll be talking about super mesh for a current source when it is located between two meshes, in between two meshes. Now we'll do this case 2 in the next session. Today we'll be discussing case 1 only. Case 1 वैसे तो it's a simpler case. If a current source is located towards a periphery, it is not located in between meshes. So you have to simply identify the two loops and you have to identify the loop currents I1 and I2. यहाँ पे वही KVL आप लगाओगे loop 1 में. By applying KVL equation to loop 1, 4 is equal to 2I1 plus 3I1 minus 3I2. Fine. Which implies 4 is equal to 6, 5I1 minus 3I2. KVL लूप 2 में लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे वोल्टेज सोर्स नहीं है, वहां पे करंट सोर्स है. फ्रॉम लूप 2, Sir, I2 is equals to minus 2 ampere. yes, I2 you can directly say from loop 2 is equal to minus 2 amperes. So यहाँ से जो करंट है वो एक्चुअली यहाँ से करंट एक्चुअली 2 amperes है. So if I2 is in this direction, you can directly say I2 is equal to minus 2 amperes. So you can then substitute it here and get the value of I1. Fine. So with a current source located towards an end of a mesh, it is much easier as compared to solving a current source when it is located in between meshes. यहाँ पे हमने directly identify किया that this is what will be the value of current. Solve for this problem. We have a 5 ampere current source. I1 is 2 sir. -2/5 होगा. Yes sir, minus 2/5. Minus 2 by 5. Minus -2/5. I2 is minus 2, so this is plus 12 minus 12 minus 12 by minus 12 by 5 or minus 2 by 5. 1 minute. So तो minus 2 -2/5 क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हो तो अच्छा प्लस ये प्लस 6 हो गया, ये minus 2 by 5. ठीक है, minus 2 by 5. So this is 5 ampere source connected across a 2 ohm resistance. यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस. This is 1 ohms, this is 40 volts. यहाँ से एक 4 ohm रेजिस्टेंस, यहाँ से एक 8 ohm रेजिस्टेंस है, माइनस प्लस 20 volts. So your question is find V naught using mesh analysis. We have 3 loops here, 1, 2 and 3. The current in this loop is I1, current in this loop is
I2. Current in this loop is I3. Apply KVL to loop 1. First of all, let us write from loop 3. लूप 3 से हमें क्या पता चलता है? लूप 3 से हमें पता चलता है कि I3 जो है आपकी that is equal to 5 amperes directly. I can. Yes. Fine. By applying KVL to loop 1 now, we have 40 is 1.0 equal to minus 7 1I1 plus 4 plus 2 minus 16. We got another question. 7 5 plus 2 With your mic. 40 is equal to 2I1 minus I1 plus 2I1 minus I3 plus 4I1 minus I2, which implies 40 is equal to 1, 2, 4, 7I1 minus 4I2 minus 2I3 minus 2I3 means minus 10. तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई और you can 10 ampere. I1 10 ampere. 7I1 minus 4I2 is equal to 50. This is your equation number 1. And applying KVL to loop 2, 8I2 minus 20 plus 4I2 minus I1. I2 5.7. 1 minute. So this becomes 4I1 minus 12I2 plus 20 is equal to 0, or you can say is equal to minus 20. This is your second equation. So you have two equations, 7I1 minus 4I2 is equal to 50 and 4I1 minus 12I2 is equal to minus 20. So from these two equations you can get the values of I1 and I2. I1 क्या आ रहा है? Seven minus 4, 4 minus 12 inverse 50 minus 20. कितना आ रहा है I1? 6.8. 12.1 something like that. 6.8 आ रहा है. सर Yes. सर हम दूसरी वाली इक्वेशन में p कॉमन करके उसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं ना? You can do that. I1 is 10 ampere. सर हमें क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. नहीं, ये तो मैं दिखा रहा हूँ. अगर आपको बाय सब्स्टिट्यूशन भी करना है, I1 I2 जैसे बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो. ठीक है. सर मेरा I1 आ रहा है 11, I2 आ रहा है 6.25. सर I1 10 होगा. Yes sir, I1 10 है और I2 5 है. 11 and 4. I
I2 5.58. I2 is only 5 and I1 is 10. Is I1 to 4? सर I2 5 होगा. I1 is 10, I2 is 5. Yes, sir. Yes, sir. I2 5. I1 is 10, I2 is 5. ठीक है, तो ये तो हो गया. अब आपको एक्चुअली V नॉट निकालना है. V नॉट किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? डायरेक्टली एक ही इक्वेशन है. इट विल बी इक्वल टू 4 ओम रेजिस्टर जो है इसके थ्रू करंट कितनी है? I1 माइनस I2. ठीक है, Yes. तो V नॉट विल बी इक्वल टू this 4 ohm resistor into I1 minus I2 because at ground this voltage is 0. So इसके बीच में जो potential difference है that is V naught minus 0, that means actually V naught only, so 4 into I1 minus I2, so that is 4 into 5, that is 20 volts. 20. ठीक है, तो ये भी हो गया आपका. So in the next session we'll be doing super mesh case. So that's all for today. Any questions? ठीक है, you can leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.